some of the important amendments which the budget of 2023 has suggested. We are going to definitely discuss the two important Supreme Court decisions which came out in last October, on 19th of October to be specific, and 20th of October. Two important Supreme Court decisions were spelled out, and we are going to discuss and understand and see what are the important takeaways of the Supreme Court decisions. We are going to see what are some of the prohibitions or some of the limits to which the charitable trust can carry out the activities. What are the basic requirements to claim the tax exemptions? What is the procedure for registration? What are the documents required? Some of the trusts also receive government grants. We are going to discuss some of the issues of government grants. What if a trust is having some religious objects? So this is something which is peculiar in nature, and we will discuss that, how trust can have application of income in case of an excess application, how to deal with it in case of a depreciation or application which is important, and how we are going to discuss and deliberate on that. How now, because of the changes in the budget, donations to other charitable trusts are also going to be a little bit different. We will discuss that. What about taxes paid? Are those considered as an application of income? Whether certain amounts which are spent outside India, whether also it is an application of income? What happens to accumulation? The time period for filling the forms, and how the accumulation of income is going to be discussed. We are going to discuss that. Section 10 and 11 of the tax is also going to be discussed. Corpus donation is something which we will look into. What happens if a trust transfers the immovable property? Sometimes there is capital gains. How is capital gains dealt in a trust scenario? We will take some real life examples. What are the time limits as far as various compliances are concerned? What about fixed deposits? Can can these trusts take corporate fixed deposits, invest in corporate fixed deposits? Any other deposits can the trust make? The statement of donation. What about non-compliances? What about limits of donation in donation in cash, and also donation in kind? What about anonymous donations? I'm sure a lot of trusts received anonymous donation. How does the trust deal with it? And also, what about the taxation of anonymous donation? What are the remedies? Then we will discuss Form 9A, any other reasons, audits of trust, the due dates, non-filing, benefits, surcharge, forms, GST. GST is very, very important, friends. Only specific activities are excluded as far as GST is concerned. However, most of the charitable trusts are now under the ambit of GST, and we will see how GST and charitable activity are linked, and it is very important to comply with the same. Professional tax, duties and other laws. Lot of other laws are also applicable to charitable trusts, and we will see how they are going to be covered as well. Charity and business, charity and capital gains, what are the interlinkages and how both are also, overlapping to some extent. Investments by charitable trust, FCRA. I'm sure all of you are aware that a lot of trusts are now receiving money from abroad, and the government, especially under the Home Ministry, has become very, very strict as far as money coming into India, which is going for wrong purposes. So FCRA is something which we will discuss today. And going forward, what are the problems? What are the things which all of us have to be very careful about is something which we will ponder. So coming to the first topic, friends, is charitable purpose. I'm sure all of you are already aware that what is charitable purpose, and every trust is actually created for a purpose, and that purpose necessarily has to be charitable. But please remember, friends, this Income Tax Act, especially under Section 215, has defined charitable purpose. Not only that, it says charitable purpose will include
relief to the poor, education, yoga, medical relief, preservation of environment, including watersheds, forests and wildlife, and also preservation of monuments or places or objects of artistic or historical interest, and advancement of any other object of general public utility. So you will be seeing here that the definition is very, very wide and is actually something which is of nature of helping most of the people, or is of general public utility. So this is very, very important. Advancement of general public utility is something which a trust should have as one of the important objects in the trust deed. Now coming to the budget, friends, you will be surprised to note that this budget of 2023 has brought in so many important amendments and changes, and most of these amendments or changes are such that they have put more and more responsibilities on the trustees and more responsibilities on the trust to ensure that they comply with the law of the land. So some of the amendments which are important in nature are as follows. So if you recollect, friends, 2 years ago, the Finance Act 21 had amended Section 1023C and Section 11. This was done mainly to prevent claiming application of corpus as application of income by charitable institution. So what used to happen, friends, earlier, the trust used to take double deductions, in the sense there was some application which was considered by the trust as not only saying that they used to take the deduction by way of application, and the same time they should also consider depreciation as an application. So sometimes they were taking double exemptions under Section 11, and the government wanted to rectify the same. Charitable trusts were not allowed to treat application of corpus as an application of income unless the corpus is refilled or reinstated by charitable institution. So corpus donation was something which was not considered as an application. Similarly, the said amendment, that is we are talking about in 2021, charitable institutions were also prevented from claiming application of borrowed money or loan as application of income unless there is a repayment of such borrowed money or loan by the charitable institution. Hence, it will be considered as application of income. So earlier, friends, in case you borrow money or in case there is an application of money by way of corpus, all those were not considered as application. But now this budget changes of 2023 has imposed that only for the period of 5 years, you will get a maximum period of 5 years for refurbishing the corpus and repayment of loan. Meaning thereby, now you have a maximum period of 5 years within which you have to mandatorily refill the corpus. Suppose earlier you have considered some amount as application which goes out as corpus. Now the government says maximum period by which you can refill the corpus, or even in case you consider as a loan as an application, but that same has to be repaid within 5 years of time. Thus, in order to claim repayment of loan as an application of income, the loan would have to be repaid within the period of 5 years. This was done to curb the availability of indefinite period for investment or depositing of funds back to the corpus or repayment of loan that would make the implementation of provision difficult. Now the cap of 5 years has been proposed. Not only that, friends, just on, I think on Friday, this entire bill has been passed by the Lok Sabha, and we are waiting for the Rajya Sabha to pass the same. Importantly, friend, another important amendment in the budget of 2023. As you all know, charitable trusts or institutions are required to apply 85% of their income for charitable or religious purpose for which it was set up. And hence they could accumulate only 15% of the income received. So they had to apply 85%, and 15% is something which they could accumulate over a period of time. This scope of 85% of application encompassed one trust giving donation to another trust.
So this was another mischief which the trust were carrying out, that one trust used to give donation to another trust, and which was having similar objectives. However, because of this, there was a creation of chain of trust of one donation being given by a trust to another trust, and these donations were being given by one trust to another trust. But while doing so, there was an accumulation of 15% which was happening at every stage. And this effective application towards the religious or charitable trust was getting reduced to that extent. So what used to happen is one trust was giving money to another trust, but at every stage there was an accumulation of 15%. But now the government is saying that there are changes. Now there are changes to say that there is now a limit that they will be considered only 85% as application of income. So this budget of 2023 proposes the amendments that earlier you could take 100% as application, but now only application of income is limited to 85% on every donation made from one trust to another trust. Another change which is of importance is with regards to application and registration of the trust. So Taxation and Other Laws, Relaxation and Amendment of Certain Provisions Act 2020 had substantially amended the provisions of application and registration of the trust. As per the amended provisions, now all the new trusts are required to apply for provisional registration, and approval is valid for 3 years. So please remember now, friends, all trusts have to mandatorily apply for re-registration, because earlier, once a registration certificate was given, it was for perpetuity, means for an indefinite period of time. The government had brought these changes to say now every trust has to get re-registered, and all this will get provisional registration, and this approval is valid for 3 years or for 6 months from the commencement of the activities, whichever is earlier. In case of trusts which are already registered, were required to furnish an application under section form 10A for re-registration or approval on e-portal filing. So everything was computerized on the computer, wherein the provisional approval or registration was granted in an automated manner without any verification. The said approval or registration and provisional registration can be cancelled by the authorities for certain specific violations. So please remember, although you are getting online registration or online provisional registration, the same could have been cancelled. In furtherance of the same, the current budget of 2023 proposes to expand the scope of specific violations under section 1023C as well as section 12AB of the Act to include cases where the application furnished on e-portal is incomplete or the information is false or incorrect information. So this is very important, friends. In case any trust makes a re-application, or in case the application is made online, but in case the application is incomplete or application is incorrect or application is false, then the same registrations will get cancelled. This has been done with the intent to curb instances where the form is furnished. So we are talking about Form 10A. The Form 10A is furnished by the trust for provisional registration or re-registration, which gets automatically approved on the e-portal platform of the Income Tax Department. The amendment to this section will come into effect from 1st April 2023. Very important, friends, exit tax. Now, this is something new. We will discuss more in subsequent slides at least, but this is a teaser which I'm giving to all of you, where a new concept of exit tax is now levied under Chapter 13 EB of the Act, that is Section 115 TD, TE and TF, 115 TF of the Income Tax Act. Now, this exit tax is levied when the organization is converted into a non-charitable organization. In case a charitable organization gets merged with a non-charitable organization, or a charitable organization with dissimilar objects, or does not transfer the assets to the other charitable organizations properly, then there is an exit tax liability.
Please remember, friends, this exit tax is very, very dangerous. It is almost 35%. And we are talking about the exit tax is going to be levied at the rate of 35% on the market value of the property which was earlier subject to the Income Tax Act. So in case they do any non-charitable work or they don't register properly, then there is an exit tax. We will also discuss subsequently, friends, that in case the trust is unable to pay, then the trustees are also personally liable to pay this exit tax. The principal officer or the trustee of the trust, as the case may be, and the trust or institution shall also be liable to pay the tax on accredited income to the credit of the central government. So please remember, friends, the principal officer or the trustees may also be liable in case the trust is unable to fulfill the obligations of the tax. Subsequently, friends, all the existing trusts are required to apply for re-registration or approval by the due date. New trusts and institutions are required to apply for provisional registration at least 1 month prior to the commencement of the previous year relevant to the AY or assessment year for which the approval is sought. Such provisional registration is valid for 3 years. Provisional registration or the provisionally registered or approved trust and institution again needs to apply for regular registration and approval at least 6 months prior to the expiry of the period of the provisional registration. So whenever there is a period given for registration, for example, 3 years, you have to start the process 6 months in advance. The trust and institutions are required to apply at least 6 months prior to the expiry of the re-registration or the approval. The finance bill, that means this budget of 2023, proposes that this provision of chapter 13 EB shall be applicable on trust or institution failing to make application for registration or provisional registration or re-registration, as the case may be, an exit tax shall be levied on such institution. So please remember, in case of a trust which is new or in case of an old trust which has to do a re-registration, and if it fails to do so, it is that time an exit tax shall be levied on the trust. The date of conversion of the trust or the institution shall be considered to be the last date for the making an application of the registration. In this respect, the liability of the principal officer, so this again they repeat, it is the principal officer or the trustees, the liability shall continue as already provided under section 115 TD of the Income Tax Act, and no changes in relation to such liability of the principal officer to exit tax have been proposed. So please remember, even after so many representation made by so many trusts, the exit tax is there, exit tax will continue. Not only that, the liability of the trustees also, they have said, in case there is there is any fault on the trust, then also the trustees will become liable for this exit tax. So this is a very important amendment, and it proposes it will come into effect from 1st April 2023. Further, friends, charitable trusts and institutions which are registered under section 1023C as well as 12AB of the Act are required to get their accounts audited. Please remember, friends, all charitable trusts are required to get their accounts audited it is mandatory. Further, where a charitable trust or institution accumulates or sets apart its income, such trust or institution is required to furnish a statement as prescribed in Form 10 on or before the due date specified for furnishing the return of income. So as of today, we all know that you have to fill up this Form 10 and this has to be given to your income tax officer. In case the charitable trust or institution deems certain income to be applied, then such trust or institution are required to furnish a statement in Form 9A, and it has to be filled at the same time as income tax return. So the time limit to give this Form 10 or 9A as of today is similar to that of the income tax return. Today, friends, again, the finance budget of
2023 has proposed, has suggested that some just 1 minute. Hello. Okay, 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 okay. तो ये बजट क्या कहना चाहता है 2023 का फ्रेंड्स, कि जब भी नया ट्रस्ट बनता है और जिस बेटा तो क्या yes, so the changes of 2023 budget says that the form, which is the form 10 or form 9A, earlier the due date was similar to that of the return, but अभी जो बजट 2023 कहना चाहता है कि एटलीस्ट 2 महीने पहले जो भी आपका रिटर्न का ड्यू डेट हो, उसके एटलीस्ट 2 महीने पहले आपको ये फॉर्म 10 या फॉर्म 9A भरना है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि हर एक ड्यू डेट जो गवर्नमेंट चाहती है उसको दे आर ट्राइंग टू प्रीपोन दिस इज डन सो टू अलाइन द डेट्स of filing form 10 and 9A with the due date of filing income tax audit report, which is 1 month prior to the due date of filing income tax return. आपको सभी को मालूम है कि रिटर्न आपको भरना है सितंबर में और 2 महीने पहले ये फॉर्म दैट इज फॉर्म 10 और 9A आपको भरना है। अगेन ये जो भी चेंजेस हैं, दिस चेंजेस विल कम इनटू प्ले फ्रॉम 1st April 2023. All the new trusts and institutions are required to apply for provisional registration at least 1 month prior to commencement of the previous year from which the registration is on. जो भी नए ट्रस्ट है उनको पहले से ही 1 मंथ पहले से ही उनके जो भी एक्टिविटीज करना चाहते हैं उसके 1 महीने पहले से ही उनको ये री रजिस्ट्रेशन करना है। एंड जो भी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होता है इन केस ऑफ ओल्ड इन केस जब भी उनका रिन्यूअल होने वाला है तो एटलीस्ट 6 मंथ्स पहले से उनको उनका जो वैलिडिटी खत्म होने वाला है एटलीस्ट 6 मंथ्स पहले उनको ये री रजिस्ट्रेशन वापस करना है। सो इसका इंप्लीकेशन क्या होता है? दिस वुड लीड टू अ सिचुएशन वेयर ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन फॉर्म्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन वन फाइनेंशियल ईयर would not be able to get exemption in that year in which they are formed if they had not applied for the same 1 month before the financial year exemption is sought. Sometimes अपन को एक ट्रस्ट अगर बराबर टाइम से काम नहीं करते हैं तो मे बी उनका एग्जेम्पशन 1 साल के लिए चला भी जा सकता है। जो भी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन उनके एक्टिविटी ऑलरेडी चालू हो गए हैं दे आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर 2 registrations, that is provisional and regular registrations simultaneously. To address this difficulty, the budget of 2023 proposes that trust or institutions which are applying for registration prior to commencement of activities may apply for provisional registration only before commencement of the activities. The trust or institutions which have already commenced shall make an application for regular registration. अभी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है जिसका ऑलरेडी काम चालू हो चुका है, जिसका काम ऑलरेडी काम चालू हो चुका है दे डायरेक्टली उनको रेगुलर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। द एप्लीकेशंस फाइल्ड विल बी एग्जामिन्ड। जो भी एप्लीकेशन हम लोग करते हैं जो रजिस्ट्रेशन या री रजिस्ट्रेशन का, जो कमिश्नर हैं या कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर हैं वो जो भी उनके तरीके हैं उसमें वो चेक करेंगे एंड अगर वो खुश हैं या पूरे तरीके से सेटिस्फाइड हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जेन्युइननेस है एक्टिविटीज के तो वो अप्रूवल 5 साल के लिए वो ट्रस्ट को दे देते हैं। प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर शैल पास एन ऑर्डर either granting it or rejecting it within 6 months of the application or the end of month in which the application was received. अभी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकम टैक्स अथॉरिटीज को दी गई है कि उनको 6 महीने में एप्लीकेशन को डिस्पोज करना है। अभी आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस पे। वी हैव सीन अभी कुछ समय पहले जो 2023 के बजट के इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आए थे उनको हम लोगों ने देखा है और अभी हम आते हैं कुछ सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑफ इंडियाज बेंच ऑफ चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित जो अभी नहीं है, अभी जस्टिस चंद्रचूड़ हैं, बट ये अर्लियर चीफ जस्टिस थे। उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है 19 अक्टूबर 2022 में
and this judgment will have far-reaching consequences. किसके बारे में? On the topic of educational institution claiming tax exemption. जो भी educational institutions tax exemption लेते थे, उन्होंने ये डिस्कस किया था. उन्होंने क्या बताया? The Supreme Court held that the requirement of educational institution or society to solely engage itself in education or educational activities and not engage in any activity of profit. सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाहता है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो काम करे, उनका जो मेन पर्पस है वो ही मेन पर्पस उनको काम करना है. उसका मतलब यह है कि सच इंस्टीट्यूशन कैन नॉट हैव ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर अनरिलेटेड टू एजुकेशन. अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टैक्स बेनिफिट लेता है तो उनको कोई भी दूसरा काम नहीं करना है. इन अदर वर्ड्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी ट्रस्ट मस्ट रिलेट टू imparting education or be incidental to educational activities. कहने का मतलब यह है, सुप्रीम कोर्ट कहना चाहता है कि अगर कोई एजुकेशनल, कोई ट्रस्ट का मेन पर्पस अगर एजुकेशन हो तो उनको वही काम करना है और इंसिडेंटल टू एजुकेशन ही काम करना है. Where the objective of the institution appears to be profit oriented, such institutions would not be entitled to approval under section 1023C of the Income Tax Act. अभी सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या कोई भी दूसरी संस्था अगर प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है तो उनको ये अप्रूवल नहीं मिलेगा. अगर वही समय पे अगर सरप्लस जनरेट होता है, अगर कोई भी ज्यादा पैसा बन जाता है इंस्टीट्यूशन पे, उसकी कोई लिमिट नहीं है, इट इज नॉट अ बार, मगर वो सरप्लस भी वही एजुकेशन और वही इंसिडेंटल एजुकेशन के लिए ही उनको अप्लाई करना है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स. सुप्रीम कोर्ट कहना चाहता है कि अभी हर ट्रस्ट को उनका जो मेन पर्पस है वो मेन पर्पस से ही काम करना है. अगर प्रॉफिट बनता भी है तो प्रॉफिट भी वही जगह पे जाना चाहिए जो उनका मेन ऑब्जेक्ट होता है. द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विच इज ऑफ जो Assistant Commissioner of Income Tax versus Ahmedabad Urban Development Authority of the same date pertains to the application of tax exemption in charitable trust and institution engaged in commercial activities in the sixth category of charitable purpose as laid down under section 215 of the Act. The advancement of any other object of general public utility. जो जनरल पब्लिक यूटिलिटी जो कॉन्सेप्ट है वो यही कहना चाहते हैं कि आप कोई भी दूसरा काम कीजिए मगर इट हैज टू बी अगेन इंसिडेंटल टू योर मेन पर्पस. दैट इज चैरिटेबल एक्टिविटीज अदर देन रिलीफ ऑफ पुअर, एजुकेशन, योगा, मेडिकल रिलीफ, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट. The Supreme Court has clarified that an assessee advancing general public utility, अभी एक दूसरा कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया है कि जनरल पब्लिक यूटिलिटी क्या होता है. तो उन्होंने बोला है कि जनरल पब्लिक यूटिलिटी कैन नॉट एंगेज, कोई भी जनरल पब्लिक यूटिलिटी में आप कोई भी दूसरा ट्रेड, आप कोई भी कॉमर्स बिजनेस नहीं कर सकते अगर आप कोई भी उसमें फी और कुछ पैसा लेते हो. However, in the course of achieving the object of general public utility, the concerned trust or society or other organization can carry out trade, commerce or other services in relation thereto provided. वो बोलते हैं कि yes, आप कोई दूसरा काम कर सकते हो मगर उसका लिमिट उन्होंने दिया है. The activity of trade, commerce or business are concerned to achieve the general objects of general public utility. The receipt from such business or commercial activity or service in relation thereto does not exceed the limit and amendment as amended over years, that is 25 lakhs पहले था, अभी maximum 20% जो भी आपका टोटल रिसीप्ट है, आपका जो इंसिडेंटल एक्टिविटी हो उसका टोटल रिसीप्ट, आपके ट्रस्ट का टोटल रिसीप्ट का मैक्सिमम 20% आप जनरल पब्लिक यूटिलिटी में आप कैरी आउट कर सकते हो. The Supreme Court has clarified
that the charging of any amount towards consideration for such activity, that is advancing general public utility, which is on a cost to cost basis or nominal cost above cost, cannot be considered as trade, commerce or business. सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे करते हो या कोई भी नॉमिनल कॉस्ट से ऊपर करते हो, तो फिर उसको ट्रेड या बिजनेस को नहीं गिना जाता है. ओनली व्हेन द चार्जेस आर सिग्निफिकेंटली अबव, अगर आप दूसरे कोई एक्टिविटी करते हो और उसमें आप पैसा लेते हो वो अधिकतर ज्यादा है या अनरीजनेबली ज्यादा है, तो ही हम लोग इसमें कंसिडर करेंगे ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस. और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मैक्सिमम 20% आपके जो भी टोटल रिसीव का आता है पैसा, आप ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस में लगा सकते हैं. तो मैक्सिमम अदर इंसिडेंटल एक्टिविटी और जनरल पब्लिक यूटिलिटी आप कर सकते हो जिसमें आप ज्यादा पैसा लेते हो, पर मैक्सिमम 20% आपका उसमें से इनकम होना चाहिए. By liberal interpretation of what Supreme Court has said, if the fees are charged on a cost-to-cost basis or nominally above such income, it cannot be considered as income from trade, commerce or business as fee or cess, and such will not come under the cap of 20%. Further, the Supreme Court has also clarified that the conclusion arrived by way of this judgment neither precludes any of the assessees advancing objects of general public utility from claiming exemptions or taxing authorities from denying exemption. ये खाली क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट दे रहा है. जो भी इनकम टैक्स ऑफिसर है उसको हर साल अपने आप से इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करना है ऑन अ ईयर टू ईयर बेसिस. हर एक साल में इनकम टैक्स ऑफिसर अलग से देखेगा, अलग से स्क्रूटिनाइज करेगा रिकॉर्ड्स को और हर एक साल को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करेगा कि कौन से इनकम जनरल पब्लिक यूटिलिटी है, कौन से इनकम ट्रेड, कॉमर्स को बढ़ा रहे हैं. सो इफ द इनकम टैक्स ऑफिसर फाइंड्स दैट income is there in the nature of trade, commerce or business, it must be examined whether the quantified limit in proviso to section 215 has been breached. So उसको ये देखना है कि 20% का जो लिमिट है वो ब्रीच करता है कि नहीं. अगर वो लिमिट ब्रीच हो जाता है then the exemption is lost. Now we come to prohibition. जो चैरिटेबल ट्रस्ट काम करता है, there are certain prohibitions or some things which trust cannot do. Under the Income Tax Act, there are no prohibitions on charitable trust to participate in commercial activities in the nature of trade, commerce or business as long as it is incidental to the main objects. आपको याद रखना है कि जो भी ट्रस्ट काम करता है अल्टीमेटली उनको ट्रस्ट डीड के हिसाब से ही काम करना है. जो भी ट्रस्ट डीड के मेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं वही हिसाब से ट्रस्ट को आगे बढ़ना है. जो भी मेन ऑब्जेक्ट्स हो वही और इंसिडेंटल है वही ट्रस्ट काम कर सकते. ऑल द ट्रस्ट कैरिंग ऑन द एक्टिविटीज ऑफ रिलीफ टू द पुअर, कोई ट्रस्ट एजुकेशन, योगा, मेडिकल रिलीफ एक्सेट्रा में काम करता है, वही एक्टिविटीज वो ट्रस्ट काम कर सकता है. प्रोहिबिशन एज पर प्रोवाइजो 1 to section 15 or section 2, in case the objects of the trust fall under the advancement of any other general public utility, please remember the maximum amount which you can gather from other incidental object is only 20%. आपके अगर दूसरे जो भी एक्टिविटीज आप ट्रस्ट के कर रहे हो, आप ज्यादा से ज्यादा उसमें से 20% आपके इनकम हो सकती है. अगर 20% के ऊपर चले गए तो क्या होगा? Failure to adhere to the capping of 20% will not only result in withdrawal of the exemption in that particular year. आपका सेक्शन 11 या इनकम टैक्स का जो एग्जेम्पशन है वो पूरा आपका चला जाएगा. एक जजमेंट है, कमिश्नर कैन नॉट कैंसल रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट अंडर सेक्शन 12B ऑन दिस ग्राउंड. सो एक जजमेंट ऑपोजिट साइड पे भी है कि जस्ट बिकॉज आपका एक साल में आपका 20% से बढ़ गया तो क्या होगा. तो एक 301 टैक्समैन का जजमेंट है, कपूरथला इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, जो एक अलग राय देती है.
अगर आपको एग्जेम्पशन क्लेम करना है तो क्या प्रोसीजर है? In order to claim exemption under section 11 and 12 of the charitable trust, it has to obtain registration under section 12AB. This was important and became mandatory from 1st April 21, and this registration has to be received from the principal commissioner or commissioner notified under CBDT. It has to spend, अभी mandatory है कि आपको 85% आपको खर्च करना ही है जो भी ट्रस्ट का इनकम होते हैं, एंड दैट ऑल्सो टुवर्ड्स चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, जो भी आपका ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट है 85% हैज टू बी स्पेंड. It has to file audit report. Audit compulsory है if the total receipts include receipt from voluntary cooperation exceeds 2,50,000 within the time allowed under section 44AB. अभी जो ट्रस्ट का ऑडिट भी आपको करना है और हर ऑडिट में सिग्नेचर चार्टर्ड अकाउंटेंट की मैंडेटरी है. इसको रिटर्न भी भरना है और इनकेस उनको अक्यूमुलेट करना है ज्यादा समय के लिए, देन फॉर्म 9A और फॉर्म 10 अभी 2 महीने पहले कर दिए हैं और वो फॉर्म भी भरना है. पहले वो टाइम लिमिट और रिटर्न का टाइम लिमिट सेम था. It has to also comply with the provisions of section 13 and 11(5). If the registration granted under 12AB is valid for 5 years, please remember हर ट्रस्ट को अर्लियर रजिस्ट्रेशन दिया जाता है प्रोविजनली 3 साल के लिए और फिर उनको वैलिड टोटल रजिस्ट्रेशन वैलिड है 5 साल के लिए. रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड अर्लियर विल ऑल्सो लैप्स. हर एक ट्रस्ट को 1 अप्रैल 21 से री रजिस्ट्रेशन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो 5 साल का लिमिट होता है. 5 साल की उनको री रजिस्ट्रेशन हर 5 साल पे री रजिस्टर करना पड़ेगा. गवर्नमेंट ग्रांट्स. If the trust has any plan to avail government grants or financial assistance, then registration with Niti Aayog through the Darpan portal is mandatory before submission of the above forms. हर एक ट्रस्ट को जिसपे गवर्नमेंट ग्रांट अगर मिलने की पॉसिबिलिटी है तो उनको नीति आयोग के साथ भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. अभी टाइम लिमिट क्या हो जाता है प्रोसेसिंग के लिए? सेक्शन 12AB बहुत इंपॉर्टेंट है. वो बोलता है अगर एप्लीकेशन एग्जिस्टिंग ट्रस्ट करता है देन 3 महीने में फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन वाज फाइल्ड उनको ये टाइम लिमिट दिया गया है. अगर ट्रस्ट एप्लीकेशन करता है देन हर 5 साल के बाद एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज टू बी डन आफ्टर 5 years. एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल, अगर आपको रिन्यूअल भी करना है तो जब भी 6 महीने बाकी हैं, 6 महीने के पहले 6 months बिफोर द अगर ट्रस्ट का वैलिडिटी खत्म होता है तो बिफोर 6 months यू हैव टू अप्लाई फॉर री रजिस्ट्रेशन. दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर 1023C एंड इन केस आपको 1023C से स्विच करना है 12AB में तो भी 6 months प्रायर आपको री रजिस्ट्रेशन करना है. अगर नया ट्रस्ट का प्रोविजनल एप्लीकेशन करना है तो आपको 1 month प्रायर, अगर कोई भी एक्टिविटी होती है सो 1 month प्रायर टू द एंड ऑफ द मंथ आपको वो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरना है. डीमिंग इन नेचर. द रजिस्ट्रेशन इज डीम्ड टू हैव बीन ग्रांटेड इफ द एप्लीकेशन इज नॉट डिस्पोज्ड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम. अभी सुप्रीम कोर्ट क्या बोलना चाहता है कि अगर आपने कुछ एप्लीकेशन किया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट तो करती है मगर उसको डिस्पोज नहीं करती है, उसका मतलब यही है कि आपको एप्लीकेशन मंजूरी मिल गई. In case of a trust having religious objects, as per explanation 3 to section 80G, trust whose activity is wholly or substantially of religious nature does not qualify as a charitable trust for section 80G. However, 80G 5B permits expenditure on religious activities to the extent of 5% of the total income of the trust. So, अगर आप चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, अगर आप रिलीजियस ऑब्जेक्ट के लिए खर्च करना चाहते हैं तो मैक्सिमम आप 5% जो भी टोटल इनकम है उसका आप रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए खर्च करना चाहते हैं. इन केस ट्रस्ट का एप्लीकेशन मिल गया है और रिजेक्शन होता है तो वो कैसे होता है? अगर एप्लीकेशन कोई कर दिया है ट्रस्ट ने तो देयर इज एब्सोल्युटली जनरली इट विल बी एक्सेप्टेड. There is no provision to reject the application under the clause. Rejection will be granted
in cases where there is a valid application of section form 10A is not filed. Most of the cases में उन्होंने application accept हो जाता है. Rejection is only in certain cases. अगर उनको लगता है object of the trust बराबर नहीं है, genuineness of the trust नहीं है और compliance कोई दूसरे law के भी नहीं है, then they will reject the application. Otherwise, most of the time the provisional application is accepted and also proper registration will be granted to every charitable trust. अगर कोई रिजेक्शन हो जाता है वैलिड ग्राउंड पे, देन ट्रस्ट कैन रिजॉल्व दैट रीजन, क्योंकि कारण दिए जाते हैं एंड एक बार वो कारण वापस एक्सेप्ट हो जाते हैं, ही कैन मेक अ फ्रेश एप्लीकेशन. ऐसा नहीं है कि दैट इज द एंड ऑफ द डे. यू कैन ऑलवेज री रजिस्टर, मेक री एप्लीकेशन एंड दैट इज पॉसिबल. इन केस द रिजेक्शन इज नॉट इन अकॉर्डेंस, देन आप डेफिनेटली ITAT में या इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में एक एप्लीकेशन कर सकते हैं. What happens if you make subsequent changes? अगर कोई ट्रस्ट प्रॉपर वे से रजिस्ट्रेशन हो जाता है मगर उसमें कोई वापस चेंजेस हैं, where a trust has been granted registration and subsequently it has adopted or certain modification of the objects of the trust, we do not conform to the condition of registration, it is required to obtain a fresh registration. So नया एक एप्लीकेशन करेंगे 30 days के अंदर अंदर and with this modification, and अगर आप नहीं करते हैं then obviously वो पूरा exemption चला जाता है एंड पूरा आपको जो ट्रस्ट का इनकम है वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट 35% पे वो टैक्स हो जाता है. The consequences are the exemption under section 11 is not applicable and then the trust will be taxable at maximum marginal rate. And from 1st June 2016, cancellation of registration will also trigger provisions of section 115 TD. Accredited income. हम लोग कंटिन्यूसली ये शब्द सुन रहे हैं, accredited income. इसका मतलब क्या है? Accredited income means the amount by which the aggregate fair value of the total asset of the trust or institution as on the specified date exceeds the total liability. So we are talking about the difference between your asset and your liability or your net worth. It is something like your net worth or your asset minus your liability, computed in accordance with the method of valuation as may be prescribed. अभी ये टैक्सेशन क्या होता है? टैक्स ऑन accredited income. Under the following circumstances, the provisions of section 115 TD are triggered. कभी उनको मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स होता है. In case the institution is converted into any form which is not eligible for registration under 12AB, अगर आपका ट्रस्ट ऐसी काम करते हैं which में आपका एप्लीकेशन अलाउड ही नहीं है, अगर आपकी जो संस्था है कोई दूसरे संस्था से मर्ज हो जाती है और उसके जो ऑब्जेक्ट है वो सिमिलर नहीं है, देन अगेन इट इज टैक्स एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट. अगर कोई संस्था ट्रांसफर या टोटल असेट्स को दूसरे जो वैलिड रजिस्टर्ड ट्रस्ट है उसमें नहीं ट्रांसफर करती है और कोई भी ऐसी जगह पे काम करती है जिसमें रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है, देन इट इज टैक्स एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट. For the purpose of point A, the institution shall be deemed to have been converted into any form not eligible for registration if the registration is granted, has been cancelled, if it is adopted or undertaking modification to the objects which is not conform to the condition, and or it has not applied for fresh registration, or the fresh registration is made but it is rejected. तो हर एक जो कंडीशन हमने पहले देखी, in that cases trust will be taxed at maximum margin. Application is very important. Friends, section 11 जो है वो बताता है कि ट्रस्ट का इनकम कहाँ होना चाहिए, बट एग्जैक्टली एप्लीकेशन को डिफाइन नहीं किया गया है. वो ही कहना चाहता है कि जो भी आपके स्पेंडिंग है या डिस्पोजल है ट्रस्ट के इनकम, वो चैरिटेबल पर्पस के लिए होने चाहिए. द कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों ही एप्लीकेशन गिने जाते हैं एंड दोनों ही ट्रस्ट के अंदर आते हैं. Donation made by charitable trust towards the corpus of any other trust or which is registered under section 12AB shall not be considered as application of income. Donation to another charitable trust out of accumulated income is not an application.
payment made in contravention to the provision of section 40 and 40A3 shall not qualify as application to the extent it is disallowed under the specific section. Expenditure out of corpus shall not be treated as application. It shall be treated as application in the year in which the said amount is reinvested back into one or more methods specified under section 11(5), maintained specifically for corpus, provided that the said amount is invested out of the income earned during the respective previous years. आप जो भी कॉर्पस आपके पास ट्रस्ट का आता है और आप एक्सपेंडिचर कॉर्पस से करते हैं, उसको एप्लीकेशन नहीं गिना जाता जब तक वो वापस नहीं आ जाता और वही कारण सर वो कॉर्पस के लिए यूज होगा, then it is considered only as corpus. Expenditure is not, कॉर्पस का एप्लीकेशन नहीं गिना जाता. Expenditure which is incurred by utilizing any loans, और ये हम लोगों ने देखा, ये बजट में चेंजेस आ गए हैं कि जो भी लोन आते हैं या बोरोइंग्स आते हैं, अगर हम बोरोइंग्स करते हैं उसको भी एप्लीकेशन नहीं गिना जाता. जहां भी उसके रीपेमेंट होता है, लोन का रीपेमेंट होता है, उसी टाइम उसको एप्लीकेशन गिना जाता है. Excess of expenditure over income brought forward from earlier year is also not treated as application. ये लास्ट ईयर चेंजेस किया गया था कि अगर आपका कोई ब्रॉड फॉरवर्ड एक्सपेंडिचर होता है, देन उसको भी एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा. लास्ट ईयर से जो भी एक्सेस एप्लीकेशन ओवर इनकम आता है पहले से, उसको भी ऑटोमेटिकली वो लैप्स हो जाता है, because there was an amendment in section 11 from last year, that is from 1st April 2022. What about depreciation? Again, ये last year amendment आ गया था कि trust can either claim depreciation or the cost of the asset as an application. Either आप depreciation ले सकते हैं या जो भी आपने asset खरीदा है उसको आपने application मांगा जा सकता है. दोनों चीज आप नहीं कर सकते. Section 11(6) prohibits the claim of depreciation in the case where the cost of property is claimed as an application. Trustees spend money beyond the powers. In case कोई भी trustee है वो पैसे खर्च करते हैं ट्रस्ट के अपने पावर से ज्यादा या ट्रस्ट डीड से ऊपर, then they will become again then that will again become a problem. But उनको ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट से ही पैसे स्पेंड करने हैं. What about donations to other charitable trusts? Donation made by a trust to another trust registered under section 12B shall be treated as application except for following cases. Donation is given towards corpus. एक ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट को पैसा दे सकता है, and definitely this budget also they have limited that to 85%. मगर आप कॉर्पस का डोनेशन नहीं दे सकते. अगेन डोनेशन जो भी accumulated income हो जाता है उसके भी आप नहीं दे सकते. Department cannot ask to demonstrate the final utilization of donation by the donee trust for granting exemption under section 11 as long as the donee trust is also registered under 12B. अगर ट्रस्ट कोई टैक्सेस पे करता है, is it considered as an application? Definitely yes. It was also held by Allahabad High Court in case of Nizam Supplemental Religious Endowment Trust 127 ITR. अगर कोई ट्रस्ट कोई भी साल में टैक्स का पैसा भरता है तो इट इज कंसिडर्ड एज एन एप्लीकेशन ऑफ ट्रस्ट. अगर कोई ट्रस्ट आउट ऑफ इंडिया पैसा खर्च करता है, नहीं, इट इज नॉट अलाउड. एग्जेम्पशन ट्रस्ट को अगर लेना है तो वही ले सकते हैं जो हिंदुस्तान में अगर कोई भी खर्च किया जाता है पैसा. Accumulation. The trust should spend or accumulate at least 85% of the income derived by property under trust, including voluntary contribution to claim under section 11 benefit. In short, दूसरे शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि मैक्सिमम ट्रस्ट 15% ही accumulate कर सकते हैं और 15% से ज्यादा नहीं कर सकते, और वो भी 5 साल तक ही. अगर वो 5 साल तक खर्च नहीं कर सकते हैं, then at the end of 5 years, then that amount will become taxable. What about section 11 और section 10? क्या ट्रस्ट सेक्शन 11 का बेनिफिट और 10 का बेनिफिट दोनों ले सकते हैं? A trust registered under section 12AB shall not be entitled to claim any exemption under section 10. अगर 11 में रजिस्टर हो गए तो सेक्शन 10 का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं.
except 1023C. Example, a trust deriving dividend income cannot claim exemption under section 1034 and will have to spend 85% of thereof to claim exemption under 11. Corpus donation. Income in the form of voluntary contributions with the specific directions from the donor that they form part of the corpus are generally referred as corpus donation. कोई भी आदमी पैसा देता है ट्रस्ट को और उसमें बोलता है कि यस ये आपको कॉर्पस के यूज ही करना है, then that becomes important. Donation received towards corpus are exempted from the trust provided that such donations are deposited or invested in the mode specified under section 11(5) maintained specifically for corpus. अलग से आपको उसको एफडी बना के रखना पड़ेगा, अलग से उसका यूज करना पड़ेगा कॉर्पस डोनेशन. कंडीशन ऑफ मेंटेनिंग अ स्पेसिफिक फंड फॉर कॉर्पस इज एप्लीकेबल. लास्ट ईयर से आपको एक अलग से कॉर्पस फंड यूटिलाइज मेंटेन करना पड़ेगा. What about capital gains? Capital gains on sale of capital asset held by trust can be claimed exempt under section 11(1) or 11(1)(a). Section 11(1) by way of application of 85% of such income. हर एक ट्रस्ट को कैपिटल गेन्स भी इंकर होता है एंड उसका अगर नया असेट हम लोग खरीदते हैं then definitely that is not considered as capital gains and it is also considered as an application. एक उदाहरण लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कॉस्ट ऑफ असेट ट्रांसफर इज 30 lakhs on which capital gains is 20 lakhs and the new capital asset is for 35 lakhs, then the amount of capital gains will be exempt, will be 15 lakhs. क्योंकि आपका जो आपने नया कैपिटल असेट लिया है वो 35 lakhs है और वो 35 lakhs नया जो कैपिटल गेन्स है उससे ज्यादा ही है. सो देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. टाइम लिमिट. क्या टाइम लिमिट है आपको? देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट टू होल्ड सच कैपिटल असेट as is the case of 54 or 54F. If it is desirable that the same should not be sold before the end of the financial year or 6 months from the date of purchase, whichever falls later. जो भी टाइम पीरियड सेक्शन 54 या 54F में दी गई है वो एक ट्रस्ट को एप्लीकेबल नहीं होती. क्या ट्रस्ट फिक्स डिपॉजिट ले सकती है? यस, डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकती है फिक्स डिपॉजिट में एंड इट विल बी कंसीडर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल असेट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 11(1)(a). स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन, ये बहुत ही जरूरी हो गया है और ये नया अमेंडमेंट है. हर एक ट्रस्ट को 31 मई के पहले एक नया फॉर्म देना पड़ेगा. एक रूल है, रूल 18AB. ट्रस्ट को जो भी ट्रस्ट रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 35AC और सेक्शन 80G में, उनको एक इलेक्ट्रॉनिकली एक एनुअल स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन जो जहां से भी पैसा आया है एक ट्रस्ट को वो रिपोर्ट करना है बिफोर 31 May फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच द डोनेशन इज रिसीव्ड. 31 मार्च 23 के लिए आपको 31 मई के पहले ये स्टेटमेंट देना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. कोई भी नॉन कंप्लायंस होता है एक 200 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा. अगर 200 रुपए का जुर्माना नहीं भी देते हैं देन आपका जो इनकम टैक्स का डिडक्शन है, एग्जेम्पशन है, वो शायद चला भी जाए. व्हाट अबाउट डोनेशंस इन कैश? कोई भी ट्रस्ट या डोनेशन अगर कैश में आती है उनको मैक्सिमम 22,000 रुपीज का लिमिट है. सो डोनेशंस मेड इन कैश अबाउट 2,000 will not qualify deduction under section 80G in hands of donor. अगर कोई भी आदमी डोनेशन देता है 2,000 रुपए से ज्यादा कैश में तो उसको 2,000 रुपए तक ही 80G का बेनिफिट मिलेगा. If a trust receive donation in kind which is not in accordance with the mode prescribed under section 11(5), for example अगर कोई ट्रस्ट को गोल्ड सिल्वर कॉइन्स आते हैं then it has to be converted into द मोड, जैसे रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 साल के अंदर अंदर वो रिसीव को मिलने के बाद. व्हाट अबाउट अनोनिमस डोनेशन? बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एज यू ऑल नो अनोनिमस डोनेशन का मतलब ये है कि जो भी पैसा ट्रस्ट को आता है वो उनको पता नहीं रहता है किसके पास से आता है. द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन गिविंग द डोनेशन इज नॉट नोन, इज कॉल्ड अनोनिमस डोनेशन. व्हाट अबाउट टैक्सेशन ऑफ अनोनिमस डोनेशन? कोई भी अनोनिमस डोनेशन आता है 1 लाख से ज्यादा या 5% ऑफ द टोटल डोनेशन से ज्यादा, then it is taxable at 30%.
डोनेशन, अनोनिमस डोनेशन का लिमिट है 1 लाख रुपया या 5% ऑफ द टोटल डोनेशन विच एवर इज हायर। अगर रिलीजियस ट्रस्ट को डोनेशन आते हैं, द प्रोविजंस ऑफ अनोनिमस डोनेशन आर नॉट एप्लीकेबल फॉर रिलीजियस ट्रस्ट। अगर कोई ट्रस्ट पार्शियली चैरिटेबल पार्शियली रिलीजियस होता है तो क्या होगा? Provision of anonymous donations are not applicable except in the case where anonymous donations are made with specific direction that donation is made for any university or education institution or hospital or other medical institution which is run by the trust. अगर कोई ट्रस्ट का पैसा अक्यूमुलेट हो जाता है, उसको मैक्सिमम 5 साल तक ही वो अक्यूमुलेट कर सकता है। अगर वो अक्यूमुलेट उस दरमियान उसको क्या करना है? सो पेंडिंग द एप्लीकेशन ऑफ इनकम, हर साल उसको एक फॉर्म भरना है, एंड इट हैज दैट एप्लीकेशन हैज टू बी इन अ मैनर व्हिच इज गिवन इन सेक्शन 11(5). It cannot be spent by way of donation to any other charitable trust. It has to be spent for the purpose for which the same is set aside. And उसके लिए हर साल फॉर्म 10 भरना पड़ेगा and should not provide the general objects. The amount spent on administration of the trust, salaries, etc. will not qualify for this purpose. Accumulation, Form 9A. Accumulation for 1 year, Form 9A is to be formed. This has to be filed online for the reasons that income is not received. Example, accrued interest. The income accumulated should be spent in the year of receipt or in the following year of the receipt. मगर maximum 5 साल आप accumulate कर सकते हैं. The income accumulated should be spent in the following year in the year of accumulation. Failure to file Form 9A or 10 within the due date will result in withdrawal of the benefit of the accumulation. Audit बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. इन केस ऑफ अ ट्रस्ट इंक्लूडिंग कॉर्पस डोनेशन, अगर कोई भी साल में आपको 2.5 लाख से ज्यादा पैसा मिला है, देन हर एक ट्रस्ट को अकाउंट्स ऑडिट करवाने हैं एंड उनका फॉर्म भी भरना है, एंड ड्यू डेट जो आपका ट्रस्ट की ड्यू डेट है वो आपको प्रिस्क्राइब ऑडिट रिपोर्ट के साथ रिटर्न भरना है. वो ड्यू डेट क्या है? फॉर्म हर एक ट्रस्ट को एक ITR 7 भरना है, उसको ITR रिटर्न 31 अक्टूबर के पहले भरना है. फॉर्म 9A भरना है, वो भी ड्यू डेट 31 अक्टूबर है, बट अभी जो फॉर्म 9A और फॉर्म 10 है उनका 2 महीने पहले हो गई है. सो फॉर्म 9A एंड फॉर्म 10 नाउ हैज टू बी फिल्ड 2 months प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम. जो फॉर्म 10 भी है, जो ऑडिट रिपोर्ट है, आपको सितंबर के पहले ऑडिट रिपोर्ट देना है. आपको फॉर्म 10BD जो है एनुअल डोनेशन स्टेटमेंट या फॉर्म BE है, आपको 31 मई सब्सिक्वेंट ईयर में जो आता है, दैट मींस फॉर 31 मार्च 23 आपको 31 मई 23 के पहले लास्ट ईयर जो भी आपको डोनेशन रिसीव हुए थे वो आपको फॉर्म 10BD या BE के भरने. अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो देन आपको इनकम टैक्स का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन फाइलिंग ITR एंड ऑडिट रिपोर्ट इन द टाइम पीरियड, then the exemption available under section 11 will not be applicable. However, what are the benefits? The benefit, the income of any university or educational institution wholly or substantially financed by the government which exists solely for educational purpose shall be fully exempt from tax. अगर आप ये लेते हैं बेनिफिट तो उस पे आपको जरा भी टैक्स नहीं मिलेगा. In case of university or any other institution solely for education and in case 5 करोड़ से ज्यादा रिसीव हो जाती है, then it is 5 करोड़ तक ही वो अलाउड होता है. 5 करोड़ से ज्यादा उनको then it will not be exempt from tax. उनको रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है. सो ये ट्रस्ट का टैक्स रेट क्या होता है? नॉर्मली हर ट्रस्ट को 85% कंपल्सरीली स्पेंड करना है. इन केस फेलियर टू स्पेंड 85%, देन जो टैक्स लगता है वो नॉर्मल जो AOP या BOI है उसको मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे लगता है. इन केस आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो, ऑडिट रेट नहीं करते हो, देन अगेन आपको हाईएस्ट रेट पे टैक्स भरना है. अगर सेक्शन 8 कंपनी है देन अगेन डोमेस्टिक रेट पे टैक्स लगता है.
अगर कोई भी नॉन कंप्लायंसेस होते हैं, देन income is taxed at maximum marginal rate, which is 30%. 30% will applicable on income from investment made in modes other than section 11(5) also says कि क्या क्या जगह पे आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो. अगर आप इन्वेस्टमेंट्स वो तरीके से नहीं करते हैं, अगेन यू विल बी टैक्स एट हाईएस्ट रेट. अनॉनमस डोनेशंस का टैक्सेबल एट 30%. जो भी अक्यूमुलेटेड या अक्यूमुलेटेड इनकम होता है, देन इट विल बी टैक्स एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट. अगर कोई भी इनकम आता है विच इज अनएक्सप्लेन्ड इनकम हो, अनएक्सप्लेन्ड असेट हो, देन अगेन इट बी टैक्स एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट. सरचार्ज भी लगा जाता है और सरचार्ज के रेट्स यहां दिए गए हैं. These are the different kinds of forms. आपको जानकारी देना बहुत जरूरी है कि हर एक ट्रस्ट को अलग अलग तरीके के फॉर्म भरने होते हैं. एंड एज ऑफ टुडे फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ दिस फॉर्म्स आर टू बी फाइल्ड बाय द ट्रस्ट ऑनलाइन. हर एक ट्रस्ट को ऑनलाइन तरीके से फॉर्म भरने हैं एंड दिस हैज टू बी कंप्लाइड. जीएसटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है फ्रेंड्स कि हर एक ट्रस्ट को जीएसटी एप्लीकेबल है या नहीं. Charitable or philanthropic activities would also get covered under the definition of business unless the same is exempt from GST law. There are certain criteria for charitable trust or NGOs to be exempted from GST. A charitable trust or NGO must be registered under section 12AA of the Income Tax Act, and the services provided by charitable trust or NGO must be for charitable activities as defined under GST. GST also specifies the criteria to be called as charitable activities. अगर फॉलोइंग में अगर आप चैरिटेबल एक्टिविटीज में आ जाते हो तो जीएसटी नहीं लगेगा, अदरवाइज आपको जीएसटी लगेगा. अगर आपके एक्टिविटीज पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के लिए हैं, फॉर एग्जांपल काउंसलिंग है, फॉर एग्जांपल टर्मिनल इल पर्सन और फिजिकली डिसेबल्ड, काउंसलिंग फॉर इफेक्टेड फॉर एचआईवी और एड्स, नार्कोटिक्स और अल्कोहल. अगर कोई एक्टिविटीज प्रमोशन ऑफ योगा का हो, प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग और एचआईवी का हो, या कोई भी स्किल डेवलपमेंट का हो, फिजिकली और मेंटली अब्यूज पर्संस, और चैरिटेबल टू प्रिजर्व द एनवायरमेंट का हो, देन इन ऑल द अबव इंस्टेंसेस आपको जीएसटी का क्राइटेरिया नहीं लगेगा. अगर आप कोई भी दूसरे एक्टिविटीज करते हो, जीएसटी विल बी एप्लीकेबल एंड मस्ट रजिस्टर विद जीएसटी. व्हाट अबाउट प्रोफेशनल टैक्स? Please remember friends, professional tax is important. Every person excluding firms and Hindu HUF engage in activities. अगर 2,500 से कम आप किसी को देते हैं, then professional tax is not applicable. In all other cases, this limit now I've heard is increased to 5,000 rupees. And professional tax अगर आप कोई भी ट्रस्ट 5,000 से ऊपर कोई भी एम्प्लॉय को दिया जाता है, देन प्रोफेशनल टैक्स डेफिनेटली आपको काटना है एंड दिस हैज टू बी कंप्लाइड विद. व्हाट अबाउट अदर लॉज? प्लीज रिमेंबर फ्रेंड्स, हर एक ट्रस्ट को अदर लॉज को कंप्लाई करना ही पड़ेगा. फॉर एग्जांपल कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, अगर दूसरे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, देन इट हैज टू कंप्लाई विद दोस रेगुलेशन. अगर कोई हॉस्पिटल है, देन हेल्थ रेगुलेशन. अगर कोई दूसरा भी एम्प्लॉयर है, देन अदर लॉज, फॉर एग्जांपल ईपीएफ है या ग्रेचुइटी है या कोई भी दूसरे कानून है, टीडीएस है, एडवांस टैक्स है, हर एक चीज का आपको कंप्लायंस तो करना ही पड़ेगा. व्हाट अबाउट चैरिटी एंड बिजनेस? merely because an object of general public utility, for example a school carrying out or charging by fees, would give to a profit that does not can be ignored. उसका मतलब यह है कि अगर आपका कोई इंसिडेंटल और जनरल पब्लिक यूटिलिटी से पैसा आता है, that is also perfectly all right, but as we discussed in earlier slides also, the maximum amount which you can receive under this head is 20%. अगर आपका सरप्लस भी आ जाता है, उसका यह मतलब नहीं है कि आप डिसरिगार्ड हो गए या डिसक्वालीफाई हो गए एज अ ट्रस्ट, बट आपका मैक्सिमम अमाउंट इंसिडेंटल एक्टिविटी से मैक्सिमम 20% होगा. What about capital gains? If a charitable institution sells a capital asset, then capital gains will rise. Since capital gains are also liable to be taxed as deemed income, one should expect that it is exempt without precondition. मगर please remember friends,
एक प्री कंडीशन भी दिया जाता है, और कहां पे टैक्स, कहां पे नहीं टैक्स, वो भी दिया गया है। नॉट ओनली दैट, सेक्शन 11(5) जो ट्रस्ट का है वो भी बोलते हैं कि ये कहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ट्रस्ट पोस्ट ऑफिस में कर सकता है, बैंक के डिपॉजिट में कर सकता है, शेड्यूल्ड बैंक के एफडी में कर सकता है, और दूसरी जगहों पे भी इन्वेस्टमेंट्स ट्रस्ट के हो सकते हैं। These are the list where trust can do various investments. Very important, FCRA. As you all know friends, FCRA का मतलब ये है Foreign Contribution Regulation Act. In fact, I would request the organizers that we can have a separate session only on FCRA. But just to give you a brief, that today the government has come down heavily on the trusts which are receiving money of FCRA. More than 100 licenses of various NGOs which have FCRA licenses have been denied renewal or deemed to have expired. The Home Ministry, as on just on Saturday, 25th of March, has granted 6 months extension to certain kind of category to renew the licenses under FCRA, because this is mandatory now. You have to renew a license of FCRA. The number of NGOs which are having active FCRA license for almost 16,000, and compared to last year, that means more than 100 or more, lots of NGOs having FCRA license have been cancelled. Why the government of India is having scanner on FCRA? Because NGOs are receiving very, very big amount. Just last year, more than 22,000 crore of rupees was received from foreign sources by NGOs. And this license was granted for 5 years. And now, as you know, it has been recently been amended in 2020, because government wants to bring more and more KYC of all the office bearers. They want to bring Aadhaar mandatory for all office bearers, directors, and key functionaries, whosoever NGO is receiving money from abroad. Not only that, all FCRA trusts have to have mandatory SBI account in a designated account of SBI in New Delhi. So these are the some of the futuristic problems. I'm not going into much detail because of paucity of time, but most of them are already covered in earlier slides because they are part of the budgetary amendments. In case there are any further questions, I will be happy to take up the same. Otherwise, I would like to stop here, and I would like to once again thank the organizers. I would like to thank the Lions Club of Walkeshwar, Mumbai chapter, the Lions Club of Mumbai Corporate, Foundation for Skill Development, and I would like to thank All India AIFTP Western Zone for giving me this opportunity. I would personally like to thank my very dear friend and a visionary Alok Bhai, my mentor Pradeep Bhai Kapadia, and also Hiral Bhai for giving me this opportunity to share whatever little bit of knowledge I have in front of all of you. And once again, thanks to all of you for being such a great audience. Thank you so much. Yeah. Thank you, Shardul. I think Pankaj Surana wants to raise that. Pankaj Bhai, you can ask a question. Yeah, good evening, sir. From the knowledge which you have provided, I have understood. I have 2 to 3 queries for that. One thing, you had said that any earning of a charitable trust, he has to spend, he or she, that charitable trust has to spend 85% on the objects of the trust, and the remaining 15% which accumulates, he have to spend within 5 years of that accumulation. Is that right? Absolutely correct, sir. Absolutely correct. And what if he is unable to spend that then? So that rollover of 15% can be done for 5 years. At the end of 5 years, that entire accumulated amount will become taxable in the 5th year. 5th year. And sir, last year one more rule was passed out by the GOI